हेलो बच्चों, let us read this question. Find the Cartesian equation of the locus of z in the complex plane satisfying modulus z minus 4 plus modulus z plus 4 equals 16. अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें समझना है जो की कॉन्सेप्ट दैट वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन इक्वेशन मतलब क्या? कार्टेशियन इक्वेशन इंप्लाइज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. कार्टेशियन सिस्टम में जो इक्वेशन होता है एंड लोकस ऑफ जेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसका मतलब बेसिकली सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ जेड इक्वल्स एक्स प्लस आयोटा वाई. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये मॉड जेड माइनस 4 प्लस मॉड जेड प्लस 4 इक्वल टू 16, इसका जो मतलब है कार्टेशियन सिस्टम में उसी को अगर हम लोग z के जगह पे x प्लस आयोटा y पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, वी गेट द एग्जैक्ट सेम मीनिंग. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट अस सी. Simply by substituting z equal to x plus iy, we will get the solution. So let us write down the equation first. Modulus z minus 4 plus modulus z plus 4, this is equal to 16. This implies that in place of z, definitely we are going to put x plus iota y minus 4. Again here also we put x plus iota y plus 4. This is equal to 16. In the standard form, both of these expressions or complex numbers can be written as the real part x minus 4 plus iota times imaginary part y for this complex number, and the right hand side will become modulus of x plus 4 plus iota times y. This is equal to 16. Now, of course, the formula of modulus is something that you need to keep in mind. So, if z equals x plus iota y, then the modulus of z, which is basically the distance from the origin, is obtained as or obtained by square root over x squared plus y squared. So इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, अप्लाई करते हैं, वी गेट स्क्वायर रूट ओवर x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 16. अभी एज यू माइट बी नोइंग, इन द सेम साइड ऑफ द इक्वेशन अगर दो स्क्वायर रूट रहता है, to simplify them before squaring both sides, it's always convenient if you take one of those terms to the other side. तो आप एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ, एंड द अदर टर्म आई एम गोइंग टू टेक टू द अदर साइड. 16 माइनस स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. Obviously, you are going to whole square both sides now. If you square both sides and continue, you will find out the left hand side becomes x minus 4 whole squared plus y squared. The square root disappears. This is equal to, applying a minus b whole square formula, 16 square will be 256 minus 2ab, that is 32 times root over x plus 4 whole squared plus y squared plus the whole square of this quantity, जो कि हो जाएगा x plus 4 whole squared plus y squared. Quite clearly, as you might have observed already, y squared दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. And also if you continue, x minus 4 whole squared, expand कर दो इसको. Rather than expanding, I think we can do something else here. Let me try and show it to you. I think we are definitely going to be able to take x plus 4 whole squared to the left hand side. So x minus 4 whole squared minus x plus 4 whole squared. Also 256 जो है उसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हो, so that the right hand side contains only the term which is under the square root. So minus 32 times square root over x plus 4 whole squared plus y squared. This should be simplifying or helping us simplify. क्यों? देखिए यहाँ से a squared minus b squared, you can apply that formula.
So a squared minus b squared will be x plus y, a plus b multiplied by a minus b. So this plus this will give you 2x, and this minus this will give you minus 8. Be very careful about the sign convention here. X minus 4 minus x minus 4 will be minus 8. The x gets cancelled. Of course यहाँ पे minus 256 है. This is equal to minus 32 times square root over x plus 4 whole squared plus y squared. दोनों साइड में स्क्वायर रूट करने से पहले जो भी कॉमन फैक्टर्स है उन्हें रिमूव करना हम लोग पसंद करेंगे. सो फ्रॉम हियर वी कैन से that minus 8 times 2 is minus 16. We can take the minus 16 common from both the terms, which will leave behind x plus 16 in the left hand side. तो यहाँ से आपने minus 16 कॉमन ले लिया, और राइट हैंड साइड से भी अगर आप minus 16 कॉमन लेते हैं, you will be left with 2 times square root over x plus 4 whole squared plus y squared. Of course, you can clearly see that the minus 16 can now again be cancelled from both sides. Continue करिए आप, दोनों साइड में आप होल स्क्वायर कर दो, तो this will become x plus 16 whole squared. This is equal to 2 squared is 4, the square root gets removed, x plus 4 whole squared plus y squared. And the rest is pretty straightforward. Simplify कर दीजिए, I mean expand कर दीजिए. X squared plus 32x plus 256. This is equal to 4 times x squared plus 8x plus 16 plus y squared. As we continue the simplification, यहाँ से we can write x squared plus 32x plus 256. This will be equal to 4x squared plus 32x plus 64 plus y squared. Now we can take everything to the right hand side, which gives us 4x squared minus x squared. यहाँ पे 0 आ जाता है. This is equal to 4x squared minus x squared will be 3x squared. Quite clearly 32x is getting cancelled from both sides, and 64 minus 256 will be minus 192, and we have plus y squared here. Therefore, quite clearly the final answer will be 3x squared plus y squared equals 192. अब सवाल देखिए, हमें पूछा है कि लोकस क्या है इसका. So obviously if you divide both sides by 192, you will get 3x squared by 192 plus y squared by 192 equals 1. ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. So x squared divided by 64 plus y squared divided by 192 equal to 1. And quite clearly, as you can see here, that this is basically the equation of an ellipse. ये एक ऐसा ellipse है जहाँ पे a less than b होता है. तो the answer is the locus of this curve is going to be basically an ellipse. This is the Cartesian equation. So question हमारा था, find the Cartesian equation of the locus of z. The answer is, this is the Cartesian equation, which basically gives us an ellipse, and the ellipse will obviously look like this, with it being centered at the origin, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो b से छोटा है. This is how the problem is to be solved. I hope you understood the solution. Best of luck.